Okay, come up with the for loop here. Now understand the syntax of for loop. For loop have 4 portion. Okay, so if have 3 portion, condition true or false. Also if have 4 option also, you can check the another one also here. If condition is true, then T, the condition is false, then false portion, and the if it both are false, then the third is also there. So if condition is also have 4 portion, but the main is 3. This one. Start, test, increment or decrement both can happen here, and the body is there. So 4 portions are there. You have to start something, you have to test something, you have to increment or decrement whatever you want, and the body is there. So executes start, then repeatedly evaluate body and increase or decrease until test fails. Okay, here we have for loop. Start I am doing starting, I assigning with 1. So I is starting value is 1. Condition, now you can check comma is there. That means the second portion have been started. I less than equal to 10. So that is our condition or test. So that means is from the starting 1, I will go to 10 only, right? So whenever I will go up 11, then it will not execute and it will end at the time of the increment of I more than 10. And the third portion is our increment, or you can use decrement depending on your condition. So if condition is greater, so that's why increment will come up. If condition is like decreasing, then the decrement will come up. Okay, so I assigning I plus 2, so I will increase with the 2, and the fourth portion is print I. So how it will work? So it will start from here. So now please see my mouse. It will start from here. It will go to the condition first. After checking condition, it will directly go to print first. See my mouse. From condition, it will not go here. It will go here first. Then it will come to the here. Then it will come to here. Then again it will go to print. Now you can see my mouse is creating a heart shape, right? So that means start will only be executed at one time only. So start, okay, start and done. Work is done for this portion. It will go here. Then after this condition, I is less than 10. Yes, because I is 1 in the starting. So it will go here, print I. Then it will go to the increment. 1 plus 2 is 3. Then it will go to the condition. 3 is less than or equal to 10. Yes. If yes, then print. Then more increment. Then condition. Then print. Then this one. So it is in a like heart shape. You can understand like this one. Is it okay? Whenever you will come up here, like it is more than 10. So for example, 9 is coming, print 9, it will go here. 9 plus 2 is 11. 11, it will go again in condition. 11 is less than or equal to 10. No. If it is no, that means your test have been false, and when false is occur, the loop will end. So this is the working for the for loop. So now you can check here. I am doing finding sum of the number from 1 to 10, right? And you can put any n, like 10 here n. So for loop is there. What I'm doing, I am doing again and again the same thing. That means I am adding my number with the previous output, right? So what I'm doing, sum is starting value is 0, because I am creating one variable in the computer memory that the something will come up here, the empty box, and the empty box name is sum. So sum is 0. So for loop will be start from here, that is in starting value 1. It will go to up to 10, and the increment is by 1, starting 1, then 1 plus 1 will be 2, then we'll go here, then sum, then here, then here. Again the heart shape will occur like this one. Whenever it will fails, the condition or test will fail, it will come up outside. Okay, come to the sum, assigning sum plus I. So what is the starting value? Sum is 0. So the sum plus 1, that is complete 1, it will store again in a sum. So for computer, we are using single variable, and we are adding the coming numbers to that particular variable and also updating it. So basically what I'm doing here, sum assigning sum plus I means I am updating sum and also using the previous value of the same variable here, right? The sum, that is previous value is 0, then 0 plus 1 will be 1, then again it will be 1 plus 1, that is 2, then 2 plus like this one.
it will add as many as I will come here. So the condition is 10. So whenever it will go to 11, it will be end, and your answer will come up here like sum, and that is 55. In the same pattern, you can do finding product of the number from 1 to n. The product starting value should be 1, because the multiplication sign will be here, product into I, and I am also updating my product variable. So product into I, that is also product 3628800, and your answer will be like this one. Come to the next. नेक्स्ट है आपका, लेट्स से वन एग्जांपल ले लेते हैं, चेकिंग ए नंबर टू बी प्राइम और नॉट. ठीक है, और मैंने दो नंबर लिए, या तो आप 37 को चेक कर लीजिए या 45 को चेक कर लीजिए. सो यहाँ पर आपका एक कोड है. ओके, सो फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया स्टार्ट. ओके, J2 कंडीशन आपको मिल गई, टेस्ट मिल गया. थर्ड में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, देन कोमा इज देयर, एंड द फोर्थ पोर्शन इज योर बॉडी. तो बॉडी में मैंने चेक किया इफ, देखिए अब फॉर लूप भी हम यूज कर रहे हैं, इफ भी अंदर आ गया. इफ mod of n comma j, mod of n comma j means you have to find out remainder. If you are dividing n by j, then the remainder will come up, and that is your 0. So that means if mod of n and j is 0, and this symbol is relational operator, remember that this is equal to 2 times equal to sign here. It's not assignment, it's equal to. So if it is 0, so then what you should do, you have to do some type of flagging. What the flag do? Flag is here 1. Flag is our but name. You can put P also, you can choose T also, like this one. So what my flagging working is, so I am telling that flag is 1. My means in the starting I am considering this number as prime, but if it is divisible by any number between 2 to n minus 1, that means this number is not prime, and the flag will go down. That means if flag is 1, then the prime number will occur. If it is not, if it has been changed somewhere in this loop, then the answer will be not a prime number. So basically this is the concept how we use flagging, right? So here the checking of a prime number, like this one, you can put n is equal to 45 here, and the code is same, and you will get not a prime number. So like this one. So that is the use of flagging. Okay, नेक्स्ट इज योर फाइंडिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10. देखिए इस कोड में था आपके पास कि यू हैव टू चेक वन पर्टिकुलर नंबर टू बी ए प्राइम और नॉट, राइट? नेक्स्ट कोड इज यू हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन सम 1 to n or something like that, this one. So this is the way of doing, right? So same type of code can be used for producing different code, and so that is a basic understanding how we can use them. So this is for particular number, and now I am giving this complete code inside a particular for loop where I am checking from 1 to 20, like this one, 1 to 20, and I am giving this n as I. So this is the basically concept, so you can easily understand it. Come to the next. I can check not even from 1 to n, I can check from 100 to 150 or 200 to 1000, like this one. What I will change in my code, the code is starting from 2. Now here I have to start from 100. That's all, nothing else. So this code and this code is same, but I have to starting is 100 and the ending is 150. This number will start from n is equal to I. That means I is 100, then 101, 102, 103, like this one, and up to 150. So every number will go to the body code, and this will check all the number is prime or not. If it is prime, the prime number n is there, it will print value of n, the which number is prime or not, right? So this is the code for prime number, like this one. Okay, next code is finding largest in the given list. Length is a function. Capital L is there, so length is a function, and the key you have to create it one list. One list means you have to use curly bracket and you have to separate elements with your commas. Then the list will be created and you will find the length of the list. The first element is on the first position, second position, third position, fourth position, fifth position, like this one. So basically this is the index. So for loop here will be go to your index working, right? So I is assigning 2 here in the starting. It will go up to length. Length is our 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So that is our complete 9 elements. It will go up to 8. Why it will go to up to 8? Because we are checking the next number already, right? Okay, so it is 2 to length, then I plus plus, that is increment in your index. So it will go to your if statement, like this one. If list, I am checking now, if list of
position. Now you can see here two brackets are there. So please remember, whenever you are accessing any element of a list, then the two square bracket is needed. Please remember this. Whenever you are accessing your list element, so you have to put position in the two times square bracket. So this is the syntax, that you have to access list element with the two square bracket. In the same you will do for matrix also. If it two dimensional, then the I comma j you will write and you will access this. So this is the basic structure of accessing your element. So list element, that is 2 times square bracket I, that is 2. List of 2 is, that is 34. Is 34 is greater than max? Max is over our 12 already. It will check it is greater or not. Yes, it is greater. Then it will store the max value, the new one, like this one. So this is the working. So it will check again and again for all the numbers, and you will store all the values in your max updated, and you will get the 96 here, like this one. You can put here less than equal to len. Okay, let's see an example. Like this one, you should put less than equal to len. So I will go to the length also here. Okay, so your answer will be 96. Come to the searching. Searching is same. For example, you want to search particular element in a list. So how we will do that? So I have list is like 12, 34, 96, 31. This the type of elements. I want to search 78, right? N is equal to 78. Then how I will search? The same concept is here in the largest. What I'm doing, I am comparing the previous max with the coming list element, right? This list element with the max, I am comparing it and I am updating it. The same concept is here. If it is my number, I am comparing, and the comparison is with equal to. Here is less than or greater than, like this concept. Here is your equal to. If my element, list element, is equal to this element particular, then we will write element found at the position I, positions pe aa jaye. So that is string element found at position, and after that comma, then I is the value for the I, right? Position index. So if list I is equal to n is my 78, so it will go to first. From here I started loop from first position, it will go to the length equal to, you have to write equal to also here, less than equal to length. Okay, so list is your n 78, so first will come up 12. 12 is equal to 78, no. Then it will move again I here plus plus, that means index will be increased with 1, so it will go to index 2. Then index 2 is 34 element, the list 2 is 34. 34 is equal to n, no. Then again third position, 78 is for equal to 96, no. Then again, so it will go like this one. Whenever it will get 78, it will print. So that is 78 here and the 78 here, and then you will get 5 or 8 here. हमारा next code है the multiplication of two matrices A and B of order 2 into 2. Suppose ये मेरे पास 2 into 2 का एक order है और उसके बाद मैं multiplication करना चाहता हूँ. How I will do it? So 2 by 2 के लिए मैं आपको पहले एक 3 by 3 के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल कंसेप्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर इसके कोड पर आऊंगा. ठीक है, सो कंसेप्ट समझ लेते हैं मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग और किस तरह से हमें कोड में चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बार मेरे पास एक मैट्रिक्स है हियर, 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 लाइक दिस वन. एक मेरा B का एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके पोजीशन है. 1 1 इज पोजीशन, 1 1 1 2 1 3, दीज आर द पोजीशन. और पोजीशन इज रो बाय कॉलम. So you know already matrix element how you should write, and the B matrix is there. Then if you are multiplying these two matrices, then the third one will come up as your answer, that is C, right? Okay, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या रूल लगाते हो? रो बाई कॉलम का रूल लगाते हो और उनके ऑर्डर भी चेक करते हो. ये 3 by 3, A/3 है और इसका लास्ट का 3, इसका स्टार्टिंग का 3 मैच होना चाहिए. यानी कि जितना फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं उतना ही फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स में रोज होना चाहिए. सो ये आप रूल लगा के फिर आगे बढ़ते हैं. तो अभी चूंकि स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3, तो देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग दैट. सो
अभी हम एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं पहले कि एक्चुअली वो बनता क्या कंसेप्ट। तो आप सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। आपका सारा होता है राइट, हर रो का हर कॉलम से मल्टीप्लाई आप करते हैं और उनका जो आंसर आता है वो कॉलम पे रख लेते हैं। दैट इज योर वर्किंग। ओके, सो लेट्स से 2 2 3 कर रहे हैं हम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा C23 पर। और C23 का आंसर जो बनेगा A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23 A23 इंटू B33 लाइक दिस वन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर आप नीचे वाला देखें समीशन फॉर्म में I1 to 3 A2K इंटू BK3 राइट। तो ऊपर जो हमने यहाँ लिखा है 3 टाइम्स समीशन हुआ है और यहाँ पर 1 1 अंदर 2 2, ये 3 3 मैच कर रहा है, तो हमने के कर दिया यहाँ पर और के का वैल्यू 1 2 3 ले लिया है। तो अब आप गौर से देखें कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इसके लिए आ रहा है आई, ये आ रहा है इसके लिए जे। जब कॉलम कर रहे हैं तो आई इज द रो, जे इज द कॉलम, लेकिन उसके अंदर में भी एक वेरिएबल और जनरेट हो रहा है जो कि लूप क्रिएट कर रहा है। यानी कि वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन सेम थिंग, वी आर एडिंग दिस टर्म then this term then this term, and that's why we need third loop in the matrix multiplication. So two loop will be for I is from row 1 2 3, 3 rows are there, columns are 3 1 2 3, so that is our Cij, right? So same for all elements, standard formula will be like this one, Cij k is equal to 1 to 3 aik into bkj. So ये फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड बन गया है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कोडिंग करते हैं। सो अब एक लूप लगेगा आई के लिए कि सी का आई के लिए 1 2 3, सी का जे के लिए 1 2 3, और उसके बाद के भी देखिए, के भी चलेगा हमारे पास 1 2 3। सो 3 लूप हमें चाहिए होंगे इसको करने के लिए। अब चूंकि यहाँ पर समीशन लगा है तो आप समीशन वाला कोड आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में वैल्यू अपने जीरो लेके सम करना होता है। सो यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो पीछे के मैंने कोड किए हैं अब वो हमने हमारे यूज होने स्टार्ट हो गए हैं। तो समझ रहे हैं आप, जो बेसिक कंसेप्ट है फंडामेंटल कोड्स हैं वो कोड्स हमारे हर जगह पर यूज हो स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे समीशन में हो, ग्रेटेस्ट फाइंडिंग में हो, सर्चिंग में हो, तो ये सारे स्पेशल कोड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आप एन रख दीजिए, ये कोड आपका बन जाएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तब मैं समझाता हूँ आई जे और के हम कोड में कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स लिए, पहले ए मैट्रिक्स इज दिस वन 1 2 3 3 1 4 एंड 1 1 5। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है दैट इज 2 डायमेंशनल लिस्ट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक लिस्ट को आप पहले लिखिए, देन कोमा दूसरा लिस्ट, देन कोमा तीसरा लिस्ट और करली ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो आपका ये 2 डायमेंशनल बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सो जो एक लिस्ट है ये आपका रो है, दैट इज फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 3 1 4, third row 1 1 5, like this one. So that is the complete matrix A, the complete matrix B, the complete matrix P is there, and the P is like our C, right? P का मतलब जो मैं वहां पर C दिखा रहा था आपको, P वो है। ओके, अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला देखिए, ये वाला, यहाँ पर गौर से देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, पी आई जे जो है आपका पी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे, समीशन वाला फॉर्मूला लगाया है। और जो हम यहाँ पर देखें वर्ड डॉक्यूमेंट में सी आई जे क्या है हमारा, समीशन ऑफ ए आई के इंटू बी के जे। देखिए कोड में भी बिल्कुल सेम आपको दिखेगा, ए आई के इंटू बी के जे, और 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज 2 टाइम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड रो एंड कॉलम जो भी उसका एलिमेंट की पोजीशन है वो कॉमे के साथ दे सकते हैं। अगर 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है तो सीधा आई आप लिखेंगे जैसे पीछे के केस में था। तो ये हमारे पास आया है, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, और ऊपर देखो यहाँ पर हमने 3 लूप लगा दिए आई के लिए 1 से n तक, n इज अवर 3 हियर, आई प्लस प्लस यानी कि एक का बढ़ के इंक्रीमेंट रहेगा, दूसरा जे के लिए, और तीसरा हमारा के लिए रहेगा। सो ये वो चीज है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर ये नहीं हो पाता कि के कहाँ से आता है। हम रो बाई कॉलम अगर कर रहे हैं तो रो हमारा आई है, कॉलम हमारा जे है, बट व्हाट इज द के? So that is the problem. So we have to understand the mathematical concept that we need summation also. You can use sum also. अगर आप ये थर्ड कॉलम यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिका में एक फंक्शन है सम, ऑलरेडी कैपिटल एस यू एम सम, आप उसको सम लिख के भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो फिर ये थर्ड लूप हट जाएगा। तो लेकिन वो कोडिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कोडिंग कर रहे हैं।
और ये आंसर आपका इसमें स्टोर हो जाएगा सारा आके। तो ये पी आई जे स्टार्टिंग वैल्यू बिल्कुल सम की तरह है, तो इस यहाँ पर सम स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। देखिए आप पी 0 0 0 0 0 0 0 मीन्स द स्टार्टिंग सम वैल्यू इज 0 इन योर पी पर्टिकुलर पोजिशन पे। सो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो समीशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। और इस तरीके से हम लूप लगा रहे हैं, 3 लूप, और आपका मैट्रिक्स फॉर्म, ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में देखने के लिए इसकी तरह से। तो इस तरह से आउटपुट लाना है अगर आपने मैट्रिक्स का, जैसे आंसर आपका इस तरह से आता है ये 2 डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्म में, बट इफ यू वांट द मैट्रिक्स फॉर्म इन योर आउटपुट देन यूज मैट्रिक्स फॉर्म M capital F capital and your matrix will come here, matrix form P, like this one. You will get this answer. Here I am checking true Q means is it true? What is it true? P equal to A dot B. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप मैथमेटिका में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए डॉट बी लिख के। तो आप ए लिखिए, बी लिखिए और थर्ड स्टेटमेंट पर डाल दिए ए डॉट बी, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने अपना फॉर्मुलेशन से आंसर निकाला है और जो मैथमेटिका ए डॉट बी से अपना आंसर निकालता है, मैं उसको चेक कर रहा हूं क्या ये दोनों सही है, जो मैंने निकाला और जो मैथमेटिका का आंसर आएगा ए डॉट बी। सो मैथमेटिका मल्टीप्लीकेशन के प्लीज रिमेंबर डॉट इज यूज्ड, राइट, डॉट यूज करते हैं ना कि स्टार। स्टार आप यूज कर देंगे तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन देगा, यानी कि 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 2 से, ऐसे। तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लीकेशन कर देगा। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप डायरेक्ट इफ यू वांट टू यूज देन डॉट इज देयर। सो वो भी मेरे पास यहाँ पर मैं चेक भी कर लिया कि जो मेरा कोड है वो मेरा बिल्कुल सही है, और जो आंसर ए डॉट बी का आना चाहिए इन पी दैट इज आल्सो ट्रू। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो यू कैन डू फॉर एनी ऑर्डर, this one for 2 into 3 or 3 into 2, this 3 and this 3 should be common, then only you can go to this one. So just remember here is n in your loops, just change here m, q and n. The row is m, column is q, like this one, 2 into 3 into 2, so that is 2 into 3 into 3 into 2. So total is m is 2, n is 3 and the q is 2, like this one, and you will put in your loop, you will get your answer for this one also. Okay, you can do sorting also. Okay, try to understand it, this sorting. And the sorting is basically you compare and you shift, you compare and you shift, you compare and you shift. Please try to understand that is your homework, how you do sorting. Come up with the while loop. While loop is your body only, test with body. लूप में, फॉर लूप में आपका क्या था, आपका स्टार्ट था, आपका टेस्ट था, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, और आपका बॉडी था फॉर लूप के अंदर, राइट, लाइक दिस वन। चार पोर्शन आपके पास थे, स्टार्ट, टेस्ट, इंक्रीमेंट और बॉडी, लेकिन वाइल लूप में आपका टेस्ट और बॉडी सिर्फ 2 को ही रखा गया है। वाइल भी आपका लूप है, इस तरह से आपने फॉर लूप किया है। ओके, यहाँ पर सेम कोड मैंने फॉर लूप का वाइल लूप में कन्वर्ट किया है। देखिए, तो फॉर लूप में हमारा था आई स्टार्टिंग 1 से 10 तक गया था, और इंक्रीमेंट किया था आई का 1 से 2 तक, 2 के इंक्रीमेंट में 10 तक गया था, और 2 का इंक्रीमेंट था, और प्रिंट हमने आई किया था। ये हमारा फॉर लूप में था, एक एग्जांपल पीछे। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा टेस्ट बॉडी सिर्फ अंदर है, तो बाहर जो हमारा ये स्टार्ट है वो आपका वाइल से बाहर आ जाता है यहाँ पर। तो स्टार्ट जो फॉर लूप के अंदर होता है वो वाइल में बाहर होता है, और जो फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट होता है वो आपका बॉडी का पार्ट बन जाता है। So remember this, you can change any for loop to your while loop. Just you have to put increment or decrement in your body. That means ये आपका सेमीकोलन के साथ आप बॉडी के अंदर डाल दीजिए स्टेटमेंट के अंदर, और स्टार्ट आप बाहर रख दीजिए। So that is the complete same structure as the for. If you are using start or increment is there. If it is not, then you can do direct while testing and body, the 2 portion only. So this is the while, same working will here, starting is 1, condition will go here, then heart shape, this will go to the print first, then this one, and then this one, like this one, the heart shape, the reverse heart shape will come up like this one, सेम वर्किंग है हार्ट शेप का। सो इंक्रीमेंट बाद में होगा, क्योंकि हमने पहले स्टेप में प्रिंट का लिखा है, तो इसलिए बाद में होगा। अगर मैं पहले लिख दूंगा तो ये पहले होगा, प्रिंट बाद में होगा। सोचो कि बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी में जो पहले लिखा है वही पहले एग्जीक्यूट होगा। सो ये हमारा वाइल लूप है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये स्टार्टिंग और इनिशियलाइजेशन नहीं करता हूँ, इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टार्टिंग में, और आपका ये इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ, देन हाउ आई कैन डू माई वाइल।
So while में देखिए, that is the only two portion. The first portion is your test, that is test here, and the body two portion. The test is while true. So that is logical value, logical expression true, and the body part is an if print. Three statements are there, separated by semicolon. Here the first is take input. Input is for user से अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ input दें अपना, आप उनको बोल सकते हैं. So input is the function कैपिटल I. तो n में असाइन किया हमने इनपुट, एंटर एन इंटीजर. इफ अगर वो इंटीजर बंदा नहीं दे रहा है तो उसको हम चेक कर रहे हैं. नॉट लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इंटीजर क्यों, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे फंक्शन हमने किए थे, प्राइम क्यों, इंटीजर क्यों, रियल क्यों, इन द फर्स्ट सेक्शन वहां पर. तो सेम वही फंक्शन हम यूज कर रहे हैं. इंटीजर क्यों चेक करता है, इफ इट इज नंबर n इज इंटीजर और नॉट. इफ इट इज नॉट देन इट शुड exit. और ये दैट इज आल्सो लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज और n इज ग्रेटर देन लेस देन 0. यानी कि अगर मैं 0 से छोटा दूंगा तब भी वो ब्रेक हो जाए, यानी कि बाहर आ जाए लूप से, तो उसके लिए हमने लगाया है फंक्शन ब्रेक नेम. सो ब्रेक इज फॉर स्टॉपिंग. सो कैपिटल B ब्रेक इज देयर with empty. There is no input in the square bracket of break. So whenever you are using integer q or n less than equal to 0, you can use break also. So इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट. और लास्ट इज n असाइनिंग n इज इक्वल टू, ये आपका स्ट्रिंग है, आपका i इक्वल टू ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा. और प्राइम क्यू नंबर चेक कर रहा हूं मैं कि जो नंबर मेरे पास यूजर ने दिया है क्या वो प्राइम है या नहीं. तो इस तरीके से मैं कर रहा हूं. मैं आपको कोड में करके दिखा देता हूं इसको. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कोड आपके पास यहाँ पर है. थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ. ये रख सेम कोड वाइल. सो अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ. देखिए तो यूजर से वो एंटर पूछ रहा है, ऊपर लिखा है यहाँ पर एंटर एन इंटीजर. जैसा स्ट्रिंग हमने यहाँ पर दिया है वाइल एन में input enter an integer, the same name is here, enter integer. Okay, let me give 47. Okay, now you can see the output here, and still it is asking for your input. Why? Because integer was right. So if it is wrong only, then it will stop, otherwise it will go running and running. So integer, let's say 78. Okay, no, false, it is not prime. Let's say 101. Okay, no, it is all, yes, it is true, it is prime. If it I'm going to -8, it is negative. Now you can check the condition here. If number is not integer or it is less than 0, so that is minus, so it will exit. Okay, so break work. So this is the way of while working that you can do for your while if you are not using initialization or increment or decrement like in for loop. So you can change any code. This one is a sum for your 1 to 10, the same code as in for. So start will come up outside the while, condition is there and the body is there, and you have increment in your body and your sum will come up. So like this one. So same is while for product, same is fame. You can check the prime number. What I put outside the start, and the increment is in the body. This complete part is body, and the semicolon is used for putting all statement together. So and the flagging I am using is same. So thank you so much. Any query?